Okay, I'm recording this lecture as well. I've actually pre-typed the code. कि हमारा time save हो जाए. जी, मैं सारा compile कर दे दूँगा. I want to discuss with you everything first. Okay, so we did discuss classes last time. मगर let me recap it again क्योंकि वो online था. So classes basically are just like making a blueprint. मैंने game की example भी दी थी कि आप एक character का blueprint बना लोगे, उसका नाम, उसकी power, different things. Okay, and then you can reuse it in any way. ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया हुआ है? I've actually defined a class fruit. In this class fruit, I can even write pass, which means the class will not do anything. But what I've done is I've actually defined a constructor. Constructor क्या होता है? Define def ये एक function है जो initialize कर रहा है. It is actually defining this class. It is defining the properties of this class. वो ये बता रहा है कि इस क्लास के अंदर मैंने डिफाइन किए हुए हैं ऑब्जेक्ट. अच्छा, ये बाय द वे खुद ही आ जाता है ना, जो लेटेस्ट पाइथन है ना, इट्स टेलिंग मी कि ये ऑब्जेक्ट है. इसमें मैंने नेम और कलर डिफाइन कर दिया. यस और नो? सो इन दिस आई हैव नेम एंड कलर. आई हैव जस्ट सेड दैट the name of this object is name and the color of this object is color. Now, how is this? What is it doing? In line 6, what we've done is I have defined is an instance. Apple is an instance. और मैंने कहा है कि apple is equals to fruit और मैंने इसको define कर दिया कि what it is. Fruit, apple is the name and red is the color. So when I, obviously, if I print this, I get is red. How come? क्योंकि वो देख रहा है कि apple में apple का color कौन सा है. So it comes in the apple and finds the color of it. क्योंकि वो इस blueprint को follow कर रहा है. मतलब एक structure define कर देते हो क्लास में कि ये मैंने structure follow करना है. You define the entire structure, उसके constructor में उसमें initialize कर देते हो और बाद में जाके आप instance में you can use it any way you want to. Further examples में मैं आपको और बताऊंगा कि इसका और फायदा क्या है. जी बड़ा बोलो. जी हाँ कर सकते हैं. ठीक है, लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आगे आपको और आहिस्ता से एडवांस एग्जांपल देता हूँ. सेम उसी की तरह एक और एग्जांपल है. सो आई डिफाइन टू पर्संस ओवर हियर एंड ऑब्वियसली इफ वी प्रिंट दिस आउट, ओह नॉट debug, sorry, just run this. So I get this obviously because what I want to do is I want to take the P1 का name. मुझे बताए P1 का name और P2 की age. So it comes to the instance and names का क्या है? How does it know what the name is? Yeah, it does because it knows that person is a class और person का जो नाम है वो यहाँ से उठाएगा वो. Yes or no? और person की जो age है उसको पता कि age वो यहाँ से उठाएगा. So a blueprint is defined. बाद में instances कोई भी हो सकता है. Instance क्या है? आप एक कार बनाते हो क्लास, उसके different properties find करते हो, मगर उसका जो कलर है, ओके, उसके जो doors हैं, something, वो instances हैं उसके. Yes or no? Let's talk about another example more. Look what we've done over here. In this particular example, what we've done is we defined a class human. And over here, we've done is we defined an initialization function. जिसमें I have is NNO. By the way, अच्छा self का मतलब क्या होता है? When we write self in initialization, what does it mean? इसका मतलब होता है इसका अपने. It's explaining itself. It's telling about its properties. So this self means that this is the property of the human class itself. ये अपनी property को define कर रहा है कि इसका क्या है. ये कहता है कि इसके अंदर, इसी के अंदर ये और ये है. And it says, okay, its name is equals to n and its on occupancy is this. So you define it within it. This is why we call it initialize. This is why we call it construct. So over here, what we're doing is we're going to make two functions. Okay, so one is do work and one is speak. Do work के अंदर मैंने randomly लिख दिया कि if self dot occupancy is equal to teacher. Now you know what double equal to means. It's a comparison. Okay. Print name, naam ye de de,
else if occupancy student हो तो ये कर दे. I don't think so any problem. मतलब this is what this function is doing. What मैंने define कर दिया ना, right भैया? Right. कोई ambiguity ना मुझे रोक देना आज कि सर इसकी समझ नहीं आई, can you elaborate? ठीक है? मैं एक और फंक्शन डालता हूँ स्पीक का, कुछ भी नहीं कर रहा स्पीक. ये क्या कर रहा है, वो सिंपल प्रिंट कर रहा है कि जो भी नाम लिखा है उसका आगे ये टेक्स्ट लिख दे, कोई इशू नहीं. फाइन, सो नथिंग मच. व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, obviously over here is I am defining over here instance. So इसको मैं छोटा नहीं कर सकता. Right, here we go. So we have over here a human class और उसके अंदर मैं define कर रहा हूँ ये दो. Okay, Saem, Tariq and teacher. So Saem इस function को call करेगा, Saem इस function को call करेगा. This instance is now calling two other functions. First, an instance is defined, then it calls two functions. Am I right? Then what happens? The same thing I'm doing over here. मैंने एक और instance define किया है और मैंने फिर उस instance के दोनों functions को call किया है. If we run this, why do we get the following output? So why? Obviously, because it says over here is Saem Tariq teaches computer science. क्योंकि again वो human class pick कर रहा है, क्योंकि fine ये वो है, तो फिर वो right. अब वो क्यों कह रहा है डू वर्क, वो जब डू वर्क पे आता है वो कहता है कि फाइन इसकी ऑक्यूपेंसी क्या है, अगर ये है यस ये है टीचर है तो फिर वो प्रिंट कर दे, और अगर सुबहान है ऑब्वियसली अगर वो स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट है तो वो ये कर दे. यू गेट माय पॉइंट, क्योंकि मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है ना कि ये स्टूडेंट है, मैंने डिफाइन किया हुआ है ना कि टीचर है. गेट माय पॉइंट? जी यूजर से इनपुट करवा सकते हैं, मगर वो मेरा मकसद भी नहीं समझने की. मैं आपको सही समझाना चाह रहा हूँ, वो आप सही कर सकते हो. किसके? हाँ इसके होते हैं, मगर इसके इंडेक्स यूज करने की जरूरत नहीं है. ओके अच्छा, क्लास ये तो वही एग्जांपल हो गई. अगले सैटरडे विल सॉल्व पास्ट पेपर P4 का. ओके उसमें आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में कि क्लासेस को पास्ट पेपर में किस तरह क्वेश्चन किया जाता है. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ट्यूसडे को सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन ट्यूसडे एंड लेट्स सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन सैटरडे. ठीक है, फाइन, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, पहले मैं आपको ट्यूसडे को टाइम दूंगा कि आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया. ठीक है, और देन आई विल सॉल्व इट. राइट, now let's discuss inheritance. Acha, do you have some idea about inheritance? Because inheritance bhi classes ka hi topic actually. Inheritance actually, let me see if I have 1 second, just 1 second. Very, very interesting topic and very easy to understand. It's not difficult. Magar a lot of importance of inheritance. Inheritance, I think so. This is the one I need. No. Wait. Okay. Now beta baat suno. Inheritance basically hota kya hai? I have a class A which has a variable this, and this is what's saying. I have a class B, and you see class B is doing what? It has A inside. Very simple. So class B is inheriting all the properties of class A. But class B on its own के अंदर पास है. इसका मतलब class B के अंदर actually कुछ नहीं है. class B के अंदर कुछ exist नहीं करता. पास मतलब just pass it. Just don't do anything. The class is there, but it's not doing anything. पास के लिए हम ही एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं टेस्ट का. ठीक है, ऑब्जेक्ट ये का. बेसिकली आउटपुट क्या होगी? पेरेंट क्लास वेरिएबल. जब मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ इज इक्वल्स टू बी, तो बी में व्हाई इज इट प्रिंटिंग पेरेंट क्लास वेरिएबल? ये प्रूव कर रहा है द फैक्ट के जो एग्जैक्टली इनहेरिट हुआ है. मैं आपको रियल एग्जांपल भी दूंगा, तो बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ. Now, obviously, इसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, इसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं, मीनिंग टू से दैट दिस इज द पेरेंट क्लास, दिस इज चाइल्ड क्लास. फाइन, राइट. ये मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ.
Then actually what I have to show you is, ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा. Okay. There are different kinds of inheritance that we have. We have actually hierarchy की जरूरत नहीं है. ये तीनों ही important है बस. Single inheritance क्या होती है? Obviously, जो मैंने example दिया उसको कहते हैं single level inheritance. Then we have is multiple inheritance. Multiple inheritance का मतलब ये है कि ये child class है, ये इसकी property और इसकी property both properties को inherit करें. An example would be over here is this one. या यही देख लो कि I made a child class parent. Okay. Sorry, parent class. Then I made parent 2 class. So I have 2 parents and I have a child class. You see what child class is doing? There are 2. It's inheriting the properties from the parent and the parent 2. But it has its own. It has its own functionality. But the most important thing is this. Right? Okay. इसकी example में मैं आता हूँ. मैं आपको ये नहीं दिखा रहा. Then we have multi-level inheritance. In multi-level inheritance, what happens is obviously the parent, child, and the grandchild. Technically, what we are trying to say over here is that I define a class A, which doesn't do anything. I define the class B, which inherits A. I develop a class C, which inherits the property of B. So automatically, the class C would have the properties of A and B. Yes or no? Because we are discussing is multi-level inheritance. जी उस तरह बिल्कुल. So अगर इसको हम देखते हैं पाइथन में किस तरह ये काम करता है, let's have a look. No, not this one, sorry. Let's talk about single level inheritance. Let's look at this example. Okay. In this example, what's happening? Let me put a space. Let me name it as. अच्छा इसको मैं देखो हो क्या रहा है इसमें. What are we doing? So we have the class employee 1. What are we doing over here? So simply वही सेम सी बात है. मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और उसमें नेम एज एंड सैलरी डिफाइन कर दिया. एनी प्रॉब्लम? I define child class, which is doing is inheriting all the properties of employee 1. Okay, but the child class obviously has the name, age, and salary. Okay, so what's happening over here is जब मैं लिखता हूँ employee 1 को define करता हूँ ये, and if I print employee 1 age, तो you would see is कि उसने automatically उसको inherit किया होगा. So you see over here is I'm getting what? 22. Yes or no? Get my point? Single level inheritance. Yes or no? हाँ मल्टीपल. पहले मैं मल्टीपल एक्सप्लेन कर दिया. मल्टी लेवल नहीं, पहले मल्टी लेवल. Look at this and see for yourself. Should I show you the output first? Obviously, the output is मुझे ना फॉन्ट का छोटा कर देना चाहिए. बहुत ही. This is function 1, this is function 2, this is function 3. output आ रहा है. क्यों आ रहा है? I defined a class parent that has this function, for example, this. Then I have a child class that has this function, that child grandchild that has this function. So I have the following functions. So when I create an object 1, which is equal to grandchild, object 1 is equal to what? That's the important thing. Object 1 is equal to grandchild. And when I actually do is this, मैं object 1 को call करता हूँ, तो how come it's printing all of them 1 2 3? क्योंकि grandchild ने actually वो सारों को inherit कर चुका है. You catch my point over here? Sure, Mayam? I hope you're not just saying yes for the sake of saying yes. है ना? क्योंकि grandchild ने inherit किया तो ये this is function, वो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, क्योंकि this actually has inherited. अच्छा, multiple inheritance क्या हो? So no, I had a better example. एक second ठहरो. Question.
ओके फाइन, ये एग्जांपल ठीक है। आई हैड बेटर एग्जांपल, मगर वो पता नहीं मैंने कहा। इसमें क्या हो रहा है, क्लास पर्सन डिफाइन की, देन क्लास कंपनी डिफाइन किया, ठीक है, देन क्लास एम्प्लॉय। द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दिस वन। So I have a person and a company there, okay? Then I have a class employee. The class employee actually is inheriting from the person and from the company. That's the point. This is where multiple हो रहा है कि नहीं हो रहा? Multiple हो रहा है ना, इसको और इसको दोनों को कर रहा है, inherit कर रहा है ना? तो now what happens is, this is the functionality of this particular class. So I make an instance, और मैं instance को define कर देता हूँ employee, ओके, इसके बराबर मैं इसको फोकस कर रहा हूँ ना। फिर भी जब मैं इसको इसमें फॉलोइंग जो फीड करता हूँ, तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, लेट्स सी। सो आई गेट इज द फॉलोइंग, ओके, नेम जैसे कमल, इट्स गिविंग मी द राइटफुल आउटपुट। ऑब्वियसली इट इज। कहने का मकसद ये है कि यस, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली पर्सन एंड कंपनी की इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ चुकी होगी। कहने का मकसद ये है बस। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. This is what inheritance is. I think so. It's not a very complicated concept. Yes, we need to practice more, obviously more. Okay. अभी आप करो, अब जब आप टाइप इन करो, खुद करोगे ना आज, तो आपको आइडिया होगा, हाँ सर फाइन, you might have a question. Let's discuss ahead. अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म बड़ा, अगेन मतलब यू नो एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म पहले से ही। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है, पॉलीमॉर्फिज्म different forms. Okay, you behaving in a different way, at times you behaving in a different way. Okay, right? You behave differently in school, you behave differently at home, but it's you. Poly, many forms. So any object, any data type, any class can work in a different way. जिस तरह बेसिक एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म की है कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, उनको अगर मैं करता हूं मल्टीप्लाई this way, so it gives me 50, because obviously it's a number, it gives me 50. But now if I do is, if I write 3 and if I write a string, it says number multiply my string, it gives me a different output. It actually does is, it writes Python 3 times, because when I say number multiplied by my string, technically it repeats Python 3 times. Yes or no? कहने का मकसद ये जो आपका operator है, operator is behaving in a polymorphism way. जिस तरह प्लस होता था ना, प्लस को भी पॉलीमॉर्फिज्म होता है। प्लस को अगर हम नंबर के साथ ट्रीट करें तो वो ऐड करेगा, अगर प्लस को हम स्ट्रिंग में यूज करेंगे तो कॉन्कैटनेट करेगा, वही पॉलीमॉर्फिज्म है। यस और नो? ठीक, डेटा टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म भी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कौन सा? नहीं, क्योंकि मैं ये 3 को मल्टीप्लाई कर तो उसको रिपीट करेगा एक्चुअली, नो इट विल रिपीट। अब एक्सपेरिमेंट भी कर लेना। अच्छा, इसकी और एग्जांपल मेरे पास फिर दूंगा। लेट्स डिस्कस इज रिकर्जन बड़ा टिपिकल आ रहा है। अब रिकर्जन के पास मैंने अपने मल्टीपल एग्जांपल्स क्रिएट किए हैं, बुक में तो एक ही है बस रिकर्जन की। लेट्स डिस्कस दिस मोर, इट्स वेरी। अच्छा, मैं किससे एक्सप्लेन करूंगा रिकर्जन मैंने? यस, हियर वी गो। बल्कि मैं स्टार्ट करता हूं with recursion 2. If I actually run this recursion 2 से start कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। So recursive, something which happens again and again. Recursion is more like loops, something that keeps on repeating and again. When you talk about set to a number to a power, ये भी recursion में आता है, ठीक है। फैक्टोरियल फंक्शंस ये भी रिकर्जन में आता है। फेबोनाची रूल अगर आपको पता है क्या होता है, वो भी रिकर्जन में आता है। सो लुक एट दिस वन, व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ क्या हो रहा है? सो बैकवर्ड बाय 2 का मैंने एक बनाया फंक्शन, इफ नंबर इज लेस देन 0 तो 0 प्रिंट करेगा, एल्स इफ दिस इज एम्प्टी, तो फॉर आई इन रेंज 1 to number टू नंबर, ओके, तो करेक्टर दिस इसको आउटपुट करेगा, प्रिंट करेगा और इनको साथ साथ ज्वाइन करेगा और एवरी टाइम -2 करता रहेगा। सो मैंने क्या किया है,
मैंने बैकवर्ड बाय 2 9 से स्टार्ट किया, तो उसने 9 -2 -2 -2 -2 फिर 0, मतलब एक रिकर्जन है। अब आपको याद होगा हमने बेसिक लूप बनाया था, which starts from zeros and goes 20 तक इवन नंबर्स को प्रिंट करते हैं, वो भी रिकर्जन में आता है। when anything goes in a loop, it's a recursion. Recursion की various examples बन सकती हैं, yes or no? Let me show you more. Look at this one. इसमें क्या कर रहे हैं हम? Okay, so obviously 2 to the fourth power is 16. Okay, for example, इसको अगर मैं आउटपुट करता हूँ, तो what do we get? We get is this fourth power this and this power this, yes or no? Okay, by the way, you do know how does this work, yes or no? No, you have an idea? No. uh, Let me explain you this. मैं वैसे बता दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कहता हूँ oh, no. So बेटा ये देखो, just trying to explain you this कि एक सिंपल सा मैंने कोड लिखा है फॉर इफ सिलेक्शन। सो इनपुट लिया मैंने इससे कंपेयर किया, प्रिंट। मैं एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ, मैंने आपसे प्रॉब्लम डिस्कस किया होगा कि वी कैन यूज डबल कोट्स इन स्ट्रिंग और प्लस यूज करके, या सॉरी कॉमा यूज करके वी कैन डू इट। ये फॉर्मेट का भी एक तरीका होता है कि आप एफ शुरू में डालो फॉर्मेट, और डबल कोट्स के अंदर जो लिखना लिखो। मगर वेर एवर यू नीड टू असाइन वेरिएबल, जस्ट यूज द कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर वेरिएबल लिख दो। लाइक यहाँ दिखा रहा है ए 12, okay, 12 is greater than 3, yes or no, or या जो भी होगा। So it's a very easy way, but the only thing is put in double quotes, and wherever you want your variables, उनको आप curly brackets में डाल दो, it works in a perfect way, yes or no? तो मैं आता हूँ दोबारा, हम डिस्कस कर रहे थे इस बात को, नहीं इस बात को, नहीं इस बात को। Okay, look at this. So this is where we are talking about recursion. हम एक फंक्शन डिफाइन किया पावर का, जिसमें हम डिफाइन किया नंबर 2 पावर, if 2 power is 0 return 1, else return number into power number to power -1, yes or no? फिर मैंने प्रिंट कर दिया उसको, ठीक है, और मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि इधर आके फॉर्मेट 4 7, तो उसने मतलब 4 7 पावर 4 7, मतलब 4 raised to power 7 2 raised to power 8 का उसने उसको आउट दे दिया, एंड वी गेट दिस 4 to the power 7 is this, 2 to the power 8 is this, yes or no? This is also an example of recursion, okay, right? क्या नहीं, वो ये पावर में नहीं है, तो डिफाइन किया हुआ है ना इसका, क्या डबल नहीं, वो जावा में लगता है। अच्छा, और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं फैक्टोरियल, सिंपल, यू नो व्हाट फैक्टोरियल इज?
दिस इज व्हाट फैक्टोरियल इज, सेम ये बी है उसमें ही आता है रिकर्जन में। और सबसे जो इंटरेस्टिंग है जो इनको पसंद आ रहा है एग्जामिनर्स को आजकल, वो है फिबोनाची। यू नो व्हाट्स फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, पता है आपको ना? वेरी गुड, एग्जैक्टली, मैथ्स में पढ़ा है, वेरी गुड। तो ये याद हो, ये फिबोनाची किस तरह काम कर रहा है? अच्छा, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले फिबोनाची। अच्छा, ये देखा है, सो इट्स सिंपल, मैं आपको प्रिंट आउट दे देता हूँ, फाइन है जी, मैं कोडिंग सारी दे देता हूँ। और ठीक है, अच्छा मैं इसको ना अब स्टॉप कर देता हूँ।